vasate. Always chanting my endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. So always these devotees always chanting glories of the holy name. तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान किया करते And हैं। how they glorify with great determination. कैसे वो गुणगान करते हैं? एकदम दृढ़ संकल्प करके। So how can we get determination? ये दृढ़ निश्चय कैसे प्राप्त किया जाए? By simply surrendering to the lotus feet of Guru. केवल मात्र गुरु के चरण कमल में समर्पित होने से। We should never depend on our own strength. हमें हमारे खुद के बल के ऊपर कभी आधारित नहीं रहना चाहिए। Like yesterday, many devotees shared in Maharaj's glorification. महाराज के ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे भक्तों ने बोला, Like as soon as you think that I am doing, that's it. We are fallen. We are going to fall from there. कि जैसे भी आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ ये सब, उधर ही हमारा पतन हो जाता है। I have my own personal experience. मुझे मेरा खुद का अनुभव भी है। So whenever I want to get up, if I depend on myself to get up early in the morning, जब भी मुझे सुबह जल्दी उठना होता है और मैं अपने आप पे आधारित रहता हूँ, I will never be able to get up. तो मैं कभी उठ नहीं पाता हूँ। But every day before I go to sleep, लेकिन प्रतिदिन सोने से पहले I go in front of Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, मैं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने and in front of Srila Gurudev, और श्रील गुरुदेव के सामने जाता हूँ and then I just begged them और उनसे मैं भिक्षा मांगता हूँ, to give me strength to get up early in the morning and chant the holy name of Lord. उनसे याचना करता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठाएं और मैं भगवान का हरि नाम जप कर सकूं। So because that is only the way that we can actually get up early in the morning and chant the holy name. तो ये केवल एकमात्र यही उपाय है कि जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठे और भगवान नाम जप कर पाए। So Maharaj says very nicely, we are not chanting just for ourselves. महाराज कहते हैं कि हम केवल अपने आप के लिए नहीं ये जप कर रहे हैं, We are chanting for the future generations also. हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये जप कर रहे हैं। Because future generations are going to get into more trouble. क्योंकि भविष्य की जो पीढ़ी है उनके सामने तो और कठिनाई है। So if we chant at least now sincerely, maybe future. गंभीरतापूर्वक जाप करेंगे तो शायद अगली पीढ़ी को लाभ होगा। So the chanting of the holy name is so important तो भगवान नाम का महिमा इतना महत्वपूर्ण है in this Kali Yuga, कलयुग में, because one time Narada Muni went to Lord Narayana, क्योंकि एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास गए थे, and then he asked Narayana, where do you reside? तो उन्होंने नारायण से पूछा, नारद मुनि ने, वे आप रहते कहाँ हो? Lord Narayana replied, Naham tishtami vaikunte, नारायण ने कहा कि नाहम कृष्णा वैकुंठे, Naham tishtami vaikunte yoginam hrudayesuva yatra gayanti madbhakta tatra tishtami Narada. So what does that mean? So Lord Narayana told Narada Muni, Narada, I do not stay in the Vaikuntha planets. नारायण भगवान ने नारद मुनि को कहा कि नारद, मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूँ, I do not stay even in the hearts of great yogis. मैं महान योगियों के हृदय में भी नहीं बसता, But yatra gayanti madbhakta, लेकिन जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, wherever my devotees song glorify me, जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, tatra tishtami Narada. उधर उधर मैं बसता हूँ। So wherever my devotees glorify, that is where I reside. जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरे महिमा गान करते हैं, उधर मैं बसता हूँ। So that is the beauty of devotional service. भक्ति में सेवा का यही तो सुंदरता है। In Bhagavatam, very nicely it is said in 11:242, भागवत में 11:2-42 में बहुत सुंदर कहा गया है, Bhakti pareshanubhavo viraktir anyatra chaisatrika eka kala prapadyamanascetasnatushyu tushti pushti ksup apayonugasam. The translation is very nice. Devotion, direct experience of the Supreme Lord and detachment from other things. What is that? First devotion, the bhakti, पहला चीज क्या है? भक्ति, and direct experience with the Supreme Lord, और भगवान के साथ सीधा अनुभव, detachment from the material things. और भौतिक चीजों से विरक्ति, All these three things ये तीनों चीजें automatically we can get. ये हमें अपने
आप ही मिल जाएगी। How somebody was hungry. If somebody was hungry, कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति यदि भूखा है, so when they take some prasad, तो जब वे कुछ प्रसाद लेते हैं, so what three things automatically will happen? तो उनको भी तीन चीजें होती हैं उनके The साथ। pleasure by taking prasadam, एक तो प्रसाद लेने का जो आनंद है वो प्राप्त होता है, and the nourishment to the body, और शरीर को पोषण मिलता है, and relief from the hunger. और भूख से छुटकारा So मिलता however these three things happen when somebody is hungry and take prasadam, है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और वो खाना खा लेता है, प्रसाद लेता है, similarly when we take the holy name of the Lord, उसी प्रकार जिस प्रकार से हम भगवान का हरि नाम लेते हैं, bhakti, direct experience to the Supreme Lord, and detachment automatically comes. तो हमारे पास भक्ति अपने आप आती है, विरक्ति अपने आप आती है, और Detachment from the material and the direct experience of the Lord. भगवान के साथ सीधा अनुभव ये हमें प्राप्त होते हैं अपने आप। So that's why this chanting of the holy name is very, very important. इसलिए ये भगवान नाम का जो जाप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। And Maharaj says that if you want to chant the holy name, try to stay away from sinful activities. और महाराज कहते हैं कि यदि आप भगवान नाम का जाप करना चाहते हैं तो पापमयी क्रियाओं से दूर रहें। Maharaj said in that lecture, in Satya Yuga, people used to live 100,000 years. महाराज वो लेक्चर में कहते हैं कि सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष की आयु तक जीते थे, And then little bit of sin started. As soon as it came to Treta Yuga, 10 times lifespan reduced. और बहुत थोड़ा बहुत यदि पाप की शुरुआत हो गई तो वो त्रेता युग में हुई। तो त्रेता युग में वो पाप के कारण सीधा 10,000 तक आयुष्य कमती हो गया। And then again some more sin introduced. Then by the time it comes to Dwapara Yuga, the lifespan reduced to 1,000 years. और कुछ और ज्यादा पाप की पहचान हुई युग में तो सीधा 1,000 साल का युग तक आयु तक द्वापर युग में हो गया सबका आयु। And then more sin introduced. Then by the time Kali Yuga, it became 100 years. और ज्यादा पाप बढ़ता गया तो कलयुग में क्या हो गया? 100 साल का आयुष्य हो गया। So we should be very, very careful that when we chant the holy name, we should always try to always stay away from sinful activities. तो जब भी हम हरि नाम लेते हैं तो हमें बहुत बहुत सावध रहना चाहिए कि हम पापमय प्रवृत्तियों से दूर रहें। That's why association of devotees is very, very important. और इसीलिए तो भगवान के भक्तों के संग की बहुत बड़ी महिमा है। Because we can say that I have strength, I can chant the holy name of the Lord in the home peacefully. और हम यदि ऐसा कहें कि मैं घर पे शांतिपूर्वक जाप करूंगा, But that is not possible. लेकिन वो संभव नहीं है। Because mind is very strong. क्यों? क्योंकि मन हमारा बहुत So mind can easily deviate us. मन हमें तुरंत डिवेट कर देगा। That's why we should be always in the association of devotees. इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा भक्तों के संग में रहें। So what happens in the association of devotees? भक्तों के संग में क्या होता है? There are multiple things happen. बहुत सारी चीजें भक्तों के संग में होती हैं। Means like how we can become strong in chanting of the holy name in the association of devotees. जैसे कि हम किस प्रकार से जप करने में एकदम शक्तिशाली हो सकते हैं भक्तों के संग के कारण। So when we associate with devotees, जब हम भक्तों का संग करते हैं we get enthusiasm तब हमें उत्साह मिलता है and excitement. और एक्साइटमेंट मिलता है। And at the same time, one devotee may not like me and I may not like another devotee. और साथ ही साथ एक भक्त मुझे पसंद करता होगा, दूसरा भक्त मुझे So- तो मैं पसंद नहीं करता हूँगा। This like and hateness, this like and hate, ये पसंद की और नापसंद की जो है that will also go away ये भी चली जाएगी because we are in the association of devotees. कि हम भक्तों के संग में हैं। So that's why chanting of the holy name in the association of devotees और इसलिए भगवान नाम का जाप भक्तों के संग में यदि किया जाता है, early in the morning especially विशेषतया सुबह जल्दी, helps us to progress quickly in Krishna consciousness. वो हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए बहुत मदद रूप होता है। That's why our Gurudev always insists, get up early in the morning. इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा हमें जोर देते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, Chant the holy name of the Lord. भगवान का नाम का जाप कीजिए। And Maharaj gives guarantee that you will definitely go back to Krishna. और महाराज गारंटी देते हैं कि आप निश्चित रूप में कृष्ण के पास जाएंगे। So one may think, one may know like so many scriptural knowledge. कोई व्यक्ति को बहुत सारे वेदों का ज्ञान होगा, One- शास्त्रों का ज्ञान होगा, One may recite Bhagavad Gita, Bhagavatam sloks left and right, up and down. दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से भगवद गीता और भागवतम के श्लोकों को कोई जानता होगा, गाता But होगा।
But Prabhupada says in one quote, लेकिन प्रभुपाद जी कोड में बहुत सुंदर कहते हैं 99% of Krishna consciousness progress 99.99% जो हमारी प्रगति है depends on the chanting of the holy name of the Lord. वो आधारित होती है हमारे हरिनाम जाप के ऊपर। It's only 1% that we need to study scriptures. केवल 1% ही हमें चाहिए कि हम शास्त्र का This, who told this? Srila Prabhupada told this. ये किसने कहा है? श्रील प्रभुपाद ने कहा है। That does not mean that we should deviate from the scriptures. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें शास्त्रों से चलित हो जाना है। We must study scriptures. हमें शास्त्रों का अभ्यास करना ही करना है। Because our Guru Maharaj always insists, right? Bhagavad Gita, Bhagavatam chanting. क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने हमेशा जोर दिया है कि भगवद गीता भागवतम चैंटिंग। Because to chant 99% Krishna, like chanting of the holy name, we need strength from the scriptures. ये 99% चैंटिंग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति चाहिए शास्त्रों से। So that's why we have to go to scriptures. तो इसलिए हमें शास्त्र के पास जाना है। So we both should be there. Scriptures has to be there, and chanting of the holy name has to be there. तो शास्त्र भी अध्ययन होना चाहिए और भगवान का नाम का जाप भी होना चाहिए। But what happens when we read scriptures? We get pride. लेकिन होता क्या है कि जब हम शास्त्र का अध्ययन करने लगते हैं तो हमें अभिमान चढ़ जाता है। Then we give less importance for chanting. और धीरे-धीरे हम जो हरिनाम जप है उसकी महत्ता कम कर देते हैं। So that's why we should always guard our chanting with Bhagavad Gita and Bhagavatam. तो इसलिए हमारा जो चैंटिंग है वो हमेशा हमें भगवद गीता और भागवतम के साथ करना चाहिए। And similarly, we should always guard study of Bhagavad Gita and Bhagavatam by chanting. और हमेशा हमें भगवद गीता भागवतम का चैंटिंग जो भी भगवद गीता और भागवतम का जो अध्ययन है वो चैंटिंग के साथ-साथ करना है। So I just want to share one nice bhajan in regards to holy name. तो मैं भगवान नाम के ऊपर एक भजन लेना चाहता हूँ। Madhuram madhurebhyopi mangalebhyopi mangalam pavanam pavanebhyopi harirnamaiva kevalam. These bhajans, Maharaj said in one lecture, these bhajans we should always sing. महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि ये जितने भी भजन हैं ये हमें हमेशा गाने ही चाहिए। So why? Because in these bhajans, these great devotees of the Lord invested so much energy and put in the short way. क्यों? क्योंकि ये जो महान महान भक्त हैं इन महान भक्त लोगों ने जो उनकी पूरी शक्ति उनके भजन में भर दी है और हमारे लिए सब कुछ एकदम छोटा कर दिया है। Because many of the people may not be able to sit down and study Bhagavatam. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठ नहीं पाएंगे कि भागवतम पढ़ने के लिए। That's why these great devotees, like took the Vedas Sara and then put into these small bhajans. ये महान भक्तों ने क्या काम किया है कि उन्होंने वेदों का पूरा सार उनके भजनों में दे दिया। So in this bhajan, very nicely, this was Kevalastakam by one of the Goswami. So Madhuram, please. ये केवलाष्टकम है एक गोस्वामियों के द्वारा गुरुत है। इसमें क्या है? Madhuram madhurebhyopi means among all the sweetest things in the world, the sweetest thing is chanting of the holy name. इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी मधुर चीजें हैं ये दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा मधुर भगवान का नाम है। But whenever we take beads and chant, ready to chant 16 rounds, we always feel very difficulty. लेकिन जब भी हम हमारी डोम भी लेते हैं जपमाला लेते हैं और शुरू करते हैं तो हमें हमेशा वो कठिन लगता है। But like how Prabhupada always give this example, that in a jaundice patient, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि पीलिया का जो दर्दी होता है, so what is the remedy for jaundice patient? ये पीलिया के दर्दी के लिए He has to drink sugarcane juice. इसकी दवाई क्या होती है कि उसको ये गन्ने का जूस पीना But when jaundice patient takes sugarcane juice, he will feel bitter taste. लेकिन जब ये पीलिया का जो रोगी होता है वो जब गन्ने का रस पीता है तो उसको कड़वा लगता है। But as he keep on taking, लेकिन जैसे वो जारी रखता है वो पीने का, then he will feel the sweetness of the sugarcane juice. धीरे-धीरे उसको उसकी जो मिठास है उसका अनुभव होगा। Why is disease gone away? क्यों? क्योंकि उसका रोग चलने लगा है। Similarly, when we chant the holy name of the Lord, उसी प्रकार से जैसे हम भगवान का नाम जब शुरू कर देते हैं, the dust accumulated in our heart, हमारे हृदय में जो धूल भरी पड़ी है it goes away slowly. वो
and then we feel the taste for the holy name. और तब जाकर के हमें भगवान नाम में रस जागता है। In Chaitanya Charitamrita, चैतन्य चरितामृत में Chaitanya Mahaprabhu said, चैतन्य महाप्रभु ने कहा the dirt accumulated in our heart is 7 miles thickness, means like 15 kilometers thickness. हमारे हृदय में जो धूल और मैला जो जमा है वो 15 किलोमीटर जितना है। So if you have a mirror and if you have a thickness 15 kilometers, can you clean just one day? तो यदि आपके पास आईना है और उसके ऊपर इतनी 15 किलोमीटर दूर तक लेयर वाली जो धूल लगी है उसको एक दिन में साफ कर पाओगे क्या? So not possible. ये असंभव है। So that's why we have to chant holy name continuously. और इसीलिए हमें हरि नाम सतत जाप करना है। Then this dirt accumulated in our heart slowly goes away. तो ये जो हमारे हृदय में है जो संचित मैल है ये धीरे 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 दूर हो जाएगा। Then we can taste the holy name, sweetness of the holy name. तब हमें भगवान के नाम का जो मधुर है मधुरपन है वो हमें महसूस होगा। Next line he says is Pavanam Pavanebhyopi. I'm sorry, Pavanam Pavanebhyopi, Mangalobhyopi Mangalam. Among all auspicious things, ये अगली लाइन में बताना है कि जितने भी मंगलकारी जो चीजें हैं this is most auspicious. ये भगवान का नाम जो है वो सबसे ज्यादा मंगलकारी है। So how? Like for example, right, if somebody dies, कैसे? लेकिन यदि उदाहरण है कि कोई व्यक्ति गुजर जाता है nobody would play Bollywood songs. कोई भी उधर बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजाएगा। Maybe, Kali Yuga completely goes down, maybe they will play one day. कलयुग यदि धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो उनकी ऐसे नीच काम करने लगेगा। But no sane person, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। nobody will play Bollywood songs. कोई भी उधर मरने के समय पर बॉलीवुड गाना नहीं बजाएगा। We always see Bhagavad Gita is played. हम हमेशा देखते हैं कि उधर भगवत गीता प्ले की जाती है। And if somebody gets married also, they sing Krishna's holy name. और जब भी किसी की शादी भी होती है तब भी लोग कहीं ना कहीं भगवान का नाम Because they do Veda mantras and then get married. लोग वेद के मंत्र का पाठन करते हैं और फिर शादी करते हैं। And when somebody takes birth, जब किसी का जन्म भी होता है then also they chant the holy name of the Lord. तब भी हम भगवान के पवित्र नाम का So which means that the holy name of the Lord is auspicious under all circumstances, all the places, all the time. तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकलता है कि भगवान का नाम जो है पवित्र नाम ये कोई भी जगह कोई भी परिस्थिति में हर लोगों के लिए ये हमेशा मंगलकारी है। So yesterday Vaishnava Chavru was telling me, कल वैष्णव साहब लोग मुझे बता रहे थे somebody told Prabhu, कि किसी ने प्रभु को कहा why you put the office room here? कि आपने इधर ऑफिस रूम इधर क्यों ले लिया? Because this is not right according to Vastu. This is not according to Vastu. हाँ ये वास्तु के मुताबिक नहीं है। Because if we chant the holy, if we are depending on the Lord, why Vastu come into picture? तो यदि हम भगवान के ऊपर आधारित हैं तो फिर वास्तु का क्या काम? Is Vastu Purush is Supreme Personality of Godhead or Bhagavan is Supreme Personality of Godhead? वास्तु का पुरुष जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर? So this is the problem with us. तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। Because there is nice story. In this story, one time what happened, Akbar, ये बहुत सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी में क्या हुआ कि एक बार अकबर था जो he got up from his bed, वो अपने बिस्तर से उठा he came to balcony, बालकनी में गया and then he just got slipped. और उधर थोड़ा फिसल गया। And then the railing will be there in the balcony. बालकनी की जो रेलिंग थी So he just hit his chin तो उसकी जो दाढ़ी थी वो उधर टकराई and he got hurt. और उसको लग गया And then news went viral in the city. और उसकी पूरी चर्चा समाचार पूरे शहर में फैल गया। Oh, and everybody, all the ministers, everybody came to Akbar. सब मिनिस्टर नेता वगैरह सब आ गए। And everybody said, what happened, what happened? सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? Then Akbar said, I got up and then I fell down and I got hurt. तो अकबर ने बताया कि मैं उठा फिर इधर बालकनी गया और गिर गया और मुझे लग गया। Then everybody was contemplating, did you see someone in the morning? Did you see anyone? Did you see anyone? तो सभी लोग तुक्का लगाने लगे कि भाई आपने किसी का सुबह चेहरा देख लिया था कुछ? Akbar said, no, I did not see. अकबर ने कहा नहीं नहीं मैंने किसी No, please remember. सब लोग बोले कि नहीं नहीं याद करो प्लीज कृपा करके याद करो। Oh, then Akbar said, I saw one dhobi man going out, तो फिर अकबर ने कहा कि हाँ मैंने एक धोबी the washerman. को जाते हुए देखा था। Oh, then ministers came to conclusion, oh, this dhobi man is the problem because you saw him and you got hurt. तो मिनिस्टरों ने कहा नेताओं ने कि ये धोबी मैन है यही मुसीबत है इसको
देखा इसलिए आपको ये लग गया। We also hear, right, when we are going on the road, if something comes in front of us, oh, this is not auspicious. तो हम भी ना, हम भी कभी कभी ऐसा अपने आप के इसमें भूसा भरा लेते हैं कि हम जा रहे हैं और कुछ लग जाता है तो हम सोचते हैं कि ये अपशुकन है। Then Akbar ordered, hang this man. अकबर ने आदेश दे दिया कि धोबी को लटका दो फांसी। But for every king, there is one, wise minister is there. लेकिन हर एक राजा के राज्य में एक बुद्धिमान So this, सलाहकार होता then है। Birbal understood the foolishness of Akbar. तो बीरबल को पता चल गया ये अकबर की मूर्खामी के बारे में। Then Birbal came to Akbar. फिर बीरबल आया अकबर के पास। And Birbal asked Akbar, what happened? Why are you doing this? तो बीरबल ने अकबर को पूछा कि क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? What are you talking nonsense? Because right, I got hurt by seeing him. तो उसने कहा अगर ये क्या तू बेवकूफी जैसे बातें करता है, मैं इधर इसको देखा और इसलिए गिर गया। Oh, really? बीरबल ने कहा हाँ ऐसी बात है क्या? You saw him, you got hurt, but he saw you, he is getting hanged. So who is actually supposed to be more problem here? बीरबल ने कहा कि तुमने उसको देखा तो तुम स्लिप हो गए और गिर गए, छोटा सा चोट लगा, लेकिन उसने तुमको देखा तो बेचारा फांसी पे चल रहा है, तो बड़ी मुसीबत कौन है? So that's why this auspiciousness comes from the chanting of the holy name. तो इसीलिए मंगलकारी जो है पवित्रता या मंगलमयता ये भगवान के नाम से आती है। So we should never worry about, these things that like custom things. Some may be we need to follow, but we don't need to caught up with them. तो हमें इन वास्तु जैसी चीजों के लिए हमें चिंतित नहीं होना है। कुछ चीजें हमें करनी होती है, लेकिन उसमें हमें फंसे नहीं रहते। So that's why we have to be very, very careful about this Moodnamaka. I don't know what do you say. Moodnamaka. Moodnamaka means like this so-called rules and regulations they kept. तो इन सभी रूढ़ी चुस्तता जो होती है और जो विधि विधान होते हैं ऐसे, इनके बारे में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। So I'll just go to the another verse in this bhajan. Niswase nahi viswasa kadarudho bhavishyati kirtaniyamato balyat harirnamaiva kevalam. So our swasa, our breath is very short. तो हमारी सांस जो है And at any time, वो बहुत छोटी है, at any time there can be halt to our breathness. तो कभी भी हमारी सांस चली जा सकती है। And Guru Maharaj said very nicely in one lecture, और गुरु महाराज ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर कहा था, normally when you take every breath, there is a lifespan is gets reduced. सामान्यतया क्या होता है कि हम जितने भी सांस लेते हैं उतने सांस के साथ साथ हमारी आयु कम होती जाती है। Maharaj has given details, but I don't remember. महाराज ने उसकी बहुत विगतवार माहिती दी है, लेकिन मुझे सब याद नहीं है। But when we chant the holy name of the Lord, 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, our breaths of life increases. लेकिन जब हम ये 16 माला जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, तो हमारी आयु भी बढ़ती है। That's what Guru Maharaj said. इसलिए गुरु महाराज कहते हैं। So Maharaj also always says this nice sloka, Kalakshepa na kartavya. महाराज हमेशा ये श्लोक कहते हैं, कालक्षेपो न कर्तव्य। Do not waste this this valuable time, Kalakshepa. This time is very, very valuable. Do not waste it. ये समय बहुत बहुत कीमती है, इसका बर्बादी मत कीजिए। Kshinam ayu kshane kshane. Every moment our lifespan is getting reduced. हर क्षण हमारा आयु जो है वो कम होता जा रहा है। We can spend millions of dollars, millions of rupees and gold and diamond. We cannot bring 1 minute passed away. हम बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए का संपत्ति या सोना वगैरह इत्यादि खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी चली गई एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते। Yamasya karuna nasti. यमस्य करुणा नास्ति। The Lord of Death, मृत्यु के राजा को, भगवान को, He is not at all spares anyone. यमराज किसी को छोड़ते नहीं। When time comes, जब समय आता है He just comes and takes us away. वो आते हैं और हमको लेके चले। That's why last line is very important. Kartavyam Hari Kirtanam. इसलिए अंतिम जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्तव्यम हरि कीर्तन। So chanting of the holy name is our prime duty. भगवान के नाम का चैंटिंग करना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है। So that's why we should always chant the holy name of the Lord constantly and continuously. इसीलिए हमें हमेशा सतत भगवान का नाम का गान करना चाहिए। I think it's 9 Prabhu time. So I'll just share I will end with one nice thing. Radheshyam Prabhu said in his lecture. मैं एक राधेश्याम प्रभु की जो बात है वो कहकर इसका अंत करता
So when he asked Gurudev, जब उन्होंने गुरुदेव को पूछा can you please tell in one sentence whole Krishna consciousness? कि एक वाक्य में आप पूरी कृष्ण भावना का वर्णन कर सकते हैं क्या? So he said, Maharaj replied, तो महाराज ने कहा, कृष्णा हमारे पति, कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ मति, ताकि हृदय में उत्पन्न हो उनके प्रतिरति. So I think everybody knows the meaning. So when we just pray Krishna, when we remember Krishna, when we chant Krishna's name, then we automatically get Krishna Prema. And Krishna Prema will be there continuously without unlimited. So that's what. कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो कृष्ण प्रेम अपने आप हमें प्राप्त होता है. So that Maharaj always says in Purushottam Mas, right? He says this nice sloka, Nanyam vadami na srunomi na chintayami, Nanyam bhajami na chayas, Nanyam bhajami na chayasrayami, Krishna tvadiya charanambu jamantarena, Sri Sri Nivasa Purushottama Dehidasyam. So Maharaj says very nicely, I will end with this. Nanyam vadami. I will not speak anything else. ये श्लोक में पुरुषोत्तम मास में महाराज ये गाते हैं और महाराज इसमें बहुत सुंदर बताते हैं कि मैं किसी के और के बारे में बोलूंगा नहीं. Na srunomi. I do not hear anything other than Krishna's holy name. कृष्ण के पवित्र नाम के अलावा मैं कुछ भी सुनूंगा नहीं. Na chintayami. I do not think anything other than the holy name of the Lord. मैं भगवान के नाम के अलावा किसी भी चीज के बारे में चिंतन नहीं करूंगा. Nanyam bhajami. I do not worship anyone else other than Krishna. मैं कृष्ण के अलावा और किसी का भी भजन नहीं करूंगा. Nacha asrayami. I do not take shelter anybody other than Krishna. मैं कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का शरण नहीं लूंगा. This should be our promise to Krishna, promise to Gurudev. ये हमारा गुरुदेव के प्रति और कृष्ण के प्रति हमारा प्रॉमिस होना चाहिए. So always remember Krishna, never forget him. हमेशा कृष्ण को याद करो, कभी उनको भूलो नहीं. So remember this one sentence, Maharaj, this is big quote I kept in a big frame in my home. तो ये जो रिमेम्बर कृष्ण का जो ये वाक्य है महाराज का, ये मैंने मेरे घर में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है. Because every time I face difficulties जब भी मुझे कठिनाइयाँ or some devotees will trouble और कोई भक्तों के द्वारा मुझे यदि or any trouble comes in the mind, या तो कोई भी तकलीफ मन के अंदर मुझे आती है problem with job, या नौकरी के साथ प्रॉब्लम आती है, Maharaj says to only one sentence, our business is to chant Krishna's holy name. महाराज उसमें एक ही कहते हैं वाक्य कि हमारा धंधा है भगवान का नाम लेना, And it is Krishna's business to sort out our problems. और ये कृष्ण का धंधा है कि कैसे वो हमारे दुखों का निवारण करें. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj ki, Grandhara Srimad Bhagvatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanandi Hari Hari. Grace Vaishnava Seva Prabhu ki. Yeah, it's there in Gandhara's famous Maharaj Sloka. Yeah, it is there.